Hello guys, and welcome back to another discussion of ICC Cricket World Cup 2023. And I apologize, मैं थोड़ा सा busy था. The last 3-4 days, I could not, come on air and discuss that brilliant win against New Zealand, that brilliant win of Afghanistan against Pakistan, and Australia smashing Netherlands. Also, Bangladesh lost a game in between. So we will discuss all of that today. So Miz is in the house. What's up, brother? How are you doing? Doing good, bro. Doing very, very good. Had a nice little break. Now I'm back, refreshed, and yeah, man, looking forward to some of these upcoming matches in the Cricket World Cup. Obviously, not very happy with what has happened with Bangladesh getting smashed again by South Africa in recent times, and yeah, we shall see. We shall see what we can do for the remaining matches. But yeah, some interesting conversations to have, man. Yeah. So before we begin with anything, I just want to start with India and how we are playing right now. Mm. It was supposed to be a very difficult game. It was a difficult game, to be honest. 191 for 5, chasing 274. So it looked like it Mm. could get messy at one stage. Uh, but the way we are playing, it's such a professional manner of cricket that we are playing right now. Like, we have chased in all 5 games. The way we assess the conditions, our bench is very solid. Hardik Pandya unfortunately got injured against Bangladesh, but the guy who replaces him gets the man of the match, gets a 5 wicket haul, Mohammad Shami, in the Mama very Shami, next game. yeah. Beautiful, beautiful bowling display by him. Then you've got Surya Kumar Yadav, who came in place of Shardul Thakur. So you could say that, okay, he was unlucky, but we know that he's a player, he's a match winner. He can win you games with when you are in a kind of a spot of bother. So the squad depth is looking good. Bench, as I've said, is looking good. The way we have approached these games is absolutely brilliant. One guy I want to mention especially is Rohit Sharma. Of course, we all talk about Virat Kohli, the absolute legend, the chase master, the way he paces his innings while chasing a big target when he's under Yeah. pressure. But Rohit Sharma, the way he's leading the side, the way he's making these bowling changes, I think in 2 to 3 games we've been like, opposition has put under us under the pump. Beat Bangladesh, they got off to a good start. Pakistan Yeah. got off to a good start. Uh, New Zealand, we got some early wickets, but had a decent partnership in between with Mitchell and Yeah. Ravindra. So we are finding ways to come back, especially after the around that 30th over, and we are finding ways to take wickets, and we are restricting oppositions below 300 to that Yeah. 270, 280 mark, and then it makes us easy for us to chase those runs. So Rohit Sharma is a big part of that, and with the batting, when he comes out, he's coming out with intent. I still remember. In the last World Cup semi-final, the way Matt Henry moved the ball all over the place, and he just went past our top order, and we did not know what hit us in the first 30 minutes of that game. Yeah. Yeah. And the second or third ball, first ball he leaves outside the off stump, and second ball he just steps out and smashes him over mid wicket for a huge six, and that unsettles a bowler, right? Yeah. And he comes out in the power play, not even power play, in the first 5-6 overs he hits you for 3-4 sixes, and you lost all rhythm, and then it makes very easy for our middle order batsmen like Virat Kohli, Correct. Shreyas Iyer, KL Rahul. So what's your observation about India? Like, what has impressed you about us the most? Bro, as you said, the professionalism. I mean, against New Zealand, as you said, some early wickets, and then that really solid partnership between Rachin Ravindra, and Daryl Mitchell. I honestly thought after the early couple of wickets, uh, I think India's got New Zealand here. They're really going to wrap things up, and New And Zealand are going there to be. and there was a drop catch by Jadeja. You don't see That that was very often. not very often. It was hit like a rocket, but you expect Jadeja to catch those ones. So I thought, ooh, what's happening here? Is there a shift? Has New Zealand in this World Cup finally have they found some sort of a pressure point on India? But even through that partnership, honestly, it never felt like the match was going away from India. It was finally balanced. And right when
it was probably New Zealand's to take it away. Mhm. India then got them all back, quick wickets of Jadeja and so on and so forth. And they restricted New Zealand for what, 270, 3. 79 or 73, Hmm. when at one point maybe 300 was in the cards. So look, very, very impressive at the moment. Um, Especially the bowling, as you said, even against Bangladesh. Like, what a flying start from us. None for 91. I even told you, Baba, that I would like to bat. Like, if Bangladesh wins the toss, I would like to bat and see what type of a total that we can put. After none for 91, I think it was over number 15 or 16. I was getting very excited. Do you know what I mean? Hmm. I was thinking, can we perhaps post a 300 total and really Hmm. put me under the pump? But once again, as you said, Rohit Sharma's captaincy. But look, Baba, Hmm. it's one thing about captaincy. You can be a good captain and make the right decision. And the But it's that execution, but the execution. execution, yep. Execution is so Hmm. important. I Hmm. can make the right decision, but if my people, my players, are not executing my ideas and my thoughts, then my plan is all going to be in the drain. You know what I mean? Hmm. Hmm. So massive kudos to the Indian bowling lineup. Honestly, I don't know where the runs, like when Thakur was there, I was thinking that's one guy that you can Hmm. perhaps take him. He's the one Hmm. guy that you want to get rid of him out of the bowling lineup. Hmm. But without Thakur, Shami comes in, and you're like, who do we take? Like, which bowler can go the journey? Every bowler comes in, and it's tight length, tight line, and it's so disciplined bowling, which makes it very difficult. And what can I say about the batting? I mean, Hmm. if you don't get Rohit, Virat Kohli, and Shubman Gill Hmm. early in the piece, it's game over. It's literally game over. You have to get those 3 wickets as soon as possible. It's very difficult, and it's even more difficult, as you said, with Rohit Sharma. He comes in with an intent. He comes in with an attitude that I will not let you settle down. I will not let you just bowl beautiful line length, get into your rhythm. I will unsettle you. I will make you confused. I will make you readjust. And then I'm going to pick you off. Do you know what I mean? So at the moment, it's very difficult. I'm looking forward to, I don't know what India's next fixture is, but I'm really looking forward to India versus South Africa. I think South Africa's batting lineup that they have from 1 to 6, I want to see them challenged against India's bowling. And then at the same time, I want to see South Africa's bowling, try and take on India's batting. I think India's bowling is tad bit better than South Africa's bowling, but I think South Africa's batting is very, very explosive at the moment. Not to say that India's batting isn't explosive, but I think that's a clash I'm really looking forward to. Yes, definitely. I think that will decide the semi-final lineup. Who finishes first, who finishes second, third. That would be a game to watch out for. Um, we still miss Rishabh Pant. That's the beauty of this team. Like, right, Wow. without Rishabh Pant, we are so dominant. Like, Mm. we miss Rishabh Pant in an emotional way, but in terms of cricketing context, thankfully, we are not, like, we are doing well without him also. Yeah. But I really hope, man, he makes a comeback, and I hope that his injuries are not so severe that he does not play international cricket again. I hope that he does What that. is And it? Was that an accident or something he had, yeah, right? yeah, yeah. He crashed his car, and like, thanks to God, like he escaped narrowly. And Wow. Was he, he like close to, like, yeah, was yeah, it a yeah, yeah, bad man. accident? Yeah, yeah. The videos got viral of his car getting crashed on the highway cam. Like, Oh my God. I'll send you. Like, you'll see, and you'll just say, "Oh, thank God that." How did Uh, he survive? yeah, like that Yeah. was the case. So I just hope wish him a speedy recovery, and he is back. He is started training. He's back in the nets. He's batting also. He's played a unofficial game also. So yeah, slowly and gradually he'll be there. But let's see if he'll be up to it playing that international level of cricket again. So let's see. What's Uh, the vibe, hmm. Baba, in India at the moment? Are the Indian fans in India thinking this is our World Cup? This is ours to lose.
there is Yeah. no chance we can let anyone else come Same as and the last play. time. Same as last time. Like what Sushant is saying, Baba, don't know. We need one loss so that we can't be overconfident. Stick to plan, feet on ground. So this is the thing, right? When we start doing well, we know that we are not Australia, that we'll smash every team on any given day. Like there is Mm, a bad day around the corner. Like in the New Zealand game, for instance, we were dropping simple catches. Like the mm, catches you'll expect us to take not even 9 times out of 10, 99 times out of 100. You'll expect us to grab those chances. But it was not happening that day. And one off day, Rohit getting played on from a ball way outside the off stump, dragging it on. Shubman Gill getting out in the very next over, playing a shot which was not required at that moment. So mm. you start to think, oh, what happens if Kohli goes out early? Kohli is dismissed cheaply. Then you are in a pickle. And the fog also came at the wrong moment when Ayer was going after the bowling. Yeah. So you think that, okay, this might not be a day. And I think if we'll lose in such a manner only. I don't think so. We'll lose on the merit. If Mm. everything goes our way, not like the rub of the green going our way. It's like if we continue to do what we are doing, I don't think so. There is any team that can beat us in our game and in our Yeah. conditions right now. So that is the point. Sushant, I just want to say that 2019 World Cup में भी we lost to England in the group stages. Mm. So ऐसा नहीं था कि we went unbeaten and the game against New Zealand got washed out. Uh, I know it's a thing that unbeaten नहीं जीतते, but we had won the Champions Trophy in 2013 unbeaten. Uh, so it's not like we don't win tournaments unbeaten. So I like to think that this team is so good that we should go unbeaten. We should go invincible. Imagine if we do it without losing a single game. That's Uh, incredible. That's that would incredible. be a team at par with like we can say the greatest World Cup team, Yeah, of Australia course. 2003, Australia Yeah. 2007, or India 2023. Like Mm. that team will be in that conversation because Australia 99 100%. even lost a game against Pakistan in the group Mm. stages. So to go and win the World Cup unbeaten would be a very, very big achievement. So I think we can do it and we have to back the team. See, if there is a one bad day around the corner and one like DRS not going our way, two or three batsmen getting out on umpire's call, you can't do anything about that. But let's hope that Mm. that is done. Uh, I'm good, bro. What's up, Frenzy? What's up? Baba Vinga will make a return tonight. Hopefully, Baba Vinga uh, is is training hard, so Baba Vinga uh, might make a return tonight. Let's hope that we'll do a stream today. Hardik Pandya injured. Kama Wing, Kama. We've got Mohammad Shami, bro. We've got Mohammad Shami. Uh, so yeah, as Miza said, the only game I'm looking forward to myself is also the South Africa game. I think What's the next fixture for India? England, Sunday, England. I mean, it should England, be a straightforward win. It should England be. have self-destructed in my opinion. Like They have. They they have have. imploded badly. They came into the tournament with batting as their strength. Bowling was never their Mm. strength in these conditions. Yeah. But their batting is also not being able to click at the moment, and it's not doing the job that it is supposed to do. Like even in the Bangladesh game, they did not score enough runs in the last 10 overs. Bangladesh pulled the game back. We pulled the game Uh, back, uh, uh, but at the end of the day, they scored too many up front. But mm, what do you think is the like? Do you feel England came into this World Cup thinking a bit arrogant, like a bit of arrogant attitude that we mm, play baseball, we have batting all the way down till number 10. We should be able to smoke every team. Do you think it's a bit of a massive reality check for them that don't get too complacent, don't get too arrogant, because any given day, especially in Indian conditions, you could be found, and they've been made to look very, very ordinary in this World Cup. mm, Kudos to Afghanistan, obviously, but mm, some of the shots that England was playing in that particular match was mm, embarrassing, to be honest. Obviously, New Zealand in the first game absolutely smoked them with their batting. And then England as well. They lost three, right? mm, They lost to Afghanistan. They lost to mm, New Zealand. Who else did they mm. lose to? South Africa. They South Africa. They yeah, got lost to smoked South by Africa. South Yeah. Africa. Mm, Absolutely smoked. So, yeah, what do you think is the issue with England at the moment, man? I mean, I feel like they're a little bit. I know what you said, that they came in batting heavy, but mm.
it's not like their bowling is too bad either. I just think they've just got the wrong attitude, man, for this World Cup. Mm. Uh, Before I get into England, just take me a couple of comments, bro. The Beastly Yeah, duo yeah. is back. Yes, this duo is ultimate. I love talking about cricket and football with Miss whenever the chance is there. And Hardik says, I am afraid of law of averages. It will be the only factor affecting us. Bro, think in the broader perspective. The law of averages says that now is the time that we win something after 10 years, a major Yeah. ICC trophy. So that is how law of averages also work, na? Negative नहीं होना है. Stay positive. Okay. Talking about England, bro, see, first of all, the problem that you've cited, the baseball, that overconfidence, that Mm, uh, I think the snobbishness which they came into this tournament, I think that is yeah. affecting them. You can see with that short selection. Yeah. The second thing is, which I think, in my opinion, has been like you can say it's a paradigm shift in cricket. Mm, Before 2011, no host nation had ever won a World Cup, right? yeah. Before 2011. And since 2011, it's only been host nations. Yeah. So, why is that? Because earlier we used to have tri series. So, Mm, teams who did not play in the major tournaments, being in a particular country, used to play tri series, and every other month you had a tri series. Like in Australia, you'll have Australia, New yeah. Zealand, Pakistan playing, or Australia, India, Sri Lanka playing, or Yeah. Bangladesh, Sri Lanka, Australia playing. So in England, you used to have England, Australia. After the Ashes, a third team used to come, and there was a Yes. tri series. Yes. So a lot of this used to happen because of no T20 cricket. So Yep. team constantly used to play in these conditions, and they were used to Used of to it. playing. Yeah. And now because of that, because of the elimination of tri series, and I really hope we find a way to get these tri series Well, I back, used to man. enjoy the Tri Series a I lot. I used to used to enjoy it. enjoy these tri series a lot, man. Like you have to wait for a T20 World Cup or an Asia Cup or a Yeah. like a 50-over World Cup to get the teams playing together again. So because of those things, teams are not able to get used to the condition in which they are playing a major tournament, Yeah. and hence they struggle when they come to, like, why England were so lethal in the last World Cup, uh, because they were used to their home conditions Their and they home know the advantage. ball Yeah. and the home advantage. And why such a low scoring final in the last World Cup, like low scoring by today's standards. I think it was around 240, 250. That Something is like what, that. Yeah. something Yeah. like that. So uh, that took something like crazy for England to chase that down, and like in the super over and whatnot. So that is down to the conditions. Australia were used to condition. India reached the semifinals of 2015 World Cup because before that World Cup, they were there for 2.5 months. Like Test they had match. played Yeah. a test series, then they were playing a one-day series, Correct. and then they approached the World Cup. And that's why they were so used to the condition. Imagine if India had just come into the World Cup after playing in Indian conditions. Why Pakistan is struggling so much? They haven't been into India. India is very different from Dubai and Abu Dhabi pitches. Yeah, of course. Yeah. There are slight differences. And Sri and Lankan pitches and are different. and also consequently why Afghanistan is playing so Mm, well as well, because mm, they play a lot of matches in India. mm, So, Afghanistan is used to those conditions. mm. Yes, definitely. Afghanistan literally play all of their cricket. Dehradun is their home ground in India. Wow. So, like, they are used to the conditions. They know how the pitches will behave, and that, I think, is a deterrent for a exciting World Cup. Like, I don't think so that if a host nation is very until a host nation is very under par, Hmm. I don't think so any host nation will lose any World Cup tournament. Rarely it will happen. Like the opposition will have to play out of their skin. Like if you are 50 and I'm 50, like it's a 50-50 contest, but your Hmm. 50 will always be greater than my 50 because you're playing in your home conditions. Earlier Yeah. it was not the case. So 50-50 means ultimately, it's not really 50-50. It's because I it's have a, that other yeah, advantage. yeah. So I think that's the issue. And that Hmm. is not just with England, that is with all the teams. Of course, England have done a madness in which they have approached this tournament. Uh, Yeah. but on the broader perspective, why only host nations are winning the tournament? It is because of the lack of tri series and lack of time for teams to adapt to the conditions, Conditions. Yeah. the local Of course. conditions. Of course. Uh, Agreed.
Yash says, Baba, I lost interest in cricket growing up because everyone downplayed a team around me and were very negative. Watching your streams this World Cup has given me a new interest in it. Thank you so much, bro. And Nice. That's a beautiful comment. thank you, bro. And the way a team is playing here, it has given me a lot of belief and interest as well. Baba, don't you think it's unfair for teams who finish first or second after winning all league games because one day, see, bro, uh, IP, see, IPL, you need to make sure that the tournament goes as long as possible. As possible. Like in World Cup, like it is make or break, right? Yeah. It doesn't, like, you don't need to have insurances if you're Yeah. if you're the best team, no matter what the There's no conditions are. second chances. There's no second There are chances. no second chances. That is what defines the best on the Yeah. knockout. On a given day, we were the best, and we did not have a fear of failure, and hence we beat the best team, and we made our way into the finals, and we won the final as well. This playoff thing, I simply, I don't understand this, to be honest, in an international tournament. It is a Especially especially in an international. hmm, In hmm, IPL, hmm, fine. As Baba said, you want to take the competition as far as possible and have more hmm, games and really allow the best team to win it. But in the World Cup, it's on that day. Yeah, you can have a bad day, but this is hmm. more than, it comes down to your character. It comes down to your mentality, how you prepare. Eh, So, and you can't just drag the competition on for too long. You know what I mean? it's like saying that have a two-legged tie in the Champions League final as well. Like, why Champions League final is a one-off game, One match. Yeah. is one match on a neutral venue. It is because of that. On that night, how you perform. Like, you are given second chances throughout the tournament before the final. Like, it's your incentive, na? Like, if you top the group, you get to play the team which has finished fourth, which are not Correct. likely the best team. Yeah. So that is a insurance for you in the first place. Now it's your problem that the team you've already beaten in the group stage, you get beat by them in the semifinals. Like, it's not a simple way of putting it, right? So there is no black or white here. Like, uh, Basically, hmm, the brother that hmm, put on the hmm, comment, he's just saying that there should be some level of hmm, insurance policy. If you win the league unbeaten, like hmm, basically it's a league format that's happening at hmm, the moment. If you win the league unbeaten, hmm, and then you have the semi-final game and you get beat, hmm, um, I feel that person who just commented feels like it's a bit of an hmm, injustice, but hmm. that's what it is, man. That's how it is. We have to accept it. Like, the same argument can be made for a final also. Like, on the day of Of the final, course. if one team who has dominated has had a bad day, they should get a second chance. That is not how the thing work. Uh, okay. People want a NBA style of, you know how in basketball And they have yes, the best of seven seven. match, Yeah, best of yeah. seven, seven match In series, Australia also, you used to get best of three finals. best of three finals. Uh, Yes, yes, yeah. yeah. Rohit pull or Virat cover drive. Well, why can't it be Rohit pull and Virat cover drive? Why it is or all the time? Like, why I have to choose? Both of them play for my team. Both of them make me happy. Like, why I have to choose? I can't play both the shots. So for me, both the shots are unreal. So please don't spam, Nikesh. Don't spam. I've got your comment, and it's both at the time. I don't choose. Okay. Now I'll come. choose because Baba is a Indian Mhm, fan. If I mhm, was to choose every day of the week, Virat Kohli cover drive every day, and that's no disrespect to Rohit Sharma. That pull shot is unbelievable, but that cover drive, oh my god, that is mhm. hot. That is hot. And both of the shots are so pleasing to eye, man. Like, effortless. Both the shots are so effortless. Okay, coming to Bangladesh now. South Mm, Africa beat Bangladesh quite convincingly, I must add. Quinton de Kock, Henrik Klassen, Aiden Markram, all on the scoreboard. I was yeah. about to say score sheet. Uh, uh, Mahmudullah, we were talking offline also, Miss. Like, Mahmudullah made a good 100. Yeah. He kind of saved some face for Bangladesh in that chase. Won't say that took them close, but yeah, it was not entirely like a
entirely a loss, that game, that you Baba, I've cannot lost take. your audio. Hello, can you hear me, guys? Can you hear me? Can't hear you. What happened? Can the live chat hear Baba, or is it just me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me, guys? Can you hear me? I can't hear him. Yes, the chat can hear me. I think something. Yeah, I think the live chat is also saying they can't hear you. Uh, Oh, they no, can no, hear you. they Why they can't can I hear you? they can. How come I can't hear you? Uh, I'll just write it in the private chat. Audio, My mic's working fine. audio source. We can hear both. I can hear Miss, but he cannot hear me. I can't hear you, Baba, but my mic is working absolutely fine. What happened? Uh, uh, What I'll just happened all try of a to sudden? rejoin, bro. Okay, let me try and rejoin. Okay. Cool. Okay. सुपर चैट आया था मैं, I'll address that. भाई हार्दिक अनफिट है ब्रो, लिटिल नर्वस. यार देखो, इसीलिए आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो होती है. बिल्कुल हार्दिक पांड्या इज अ ह्यूज मिस. मैं भी नर्वस हूँ, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने आके हमारा अटैक संभाला एंड ही गेव अस अ प्रॉपर ऑप्शन इन बॉलिंग, एंड सूर्या कैन फिल दैट बैटिंग वाला वॉइड, तो आई थिंक वी शुड बी फाइन. इज इट ओके नाउ? Perfect. I don't know what आई happened, man. glitch, some glitch happened. Yeah. I can Okay, definitely so hear you now. coming back to Bangladesh, bro. Mahmudullah, we were talking about him and some Hmm. decisions we had already spoken about in the previous stream. Do you think that Bangladesh like have let themselves down? They, with the talent that they have, they could have approached this tournament in much better way. 100%, man. You know what the funny thing is, Baba? I don't know if you know about this. Mahmudullah wasn't even selected. Like he wasn't even meant to be selected in this tournament. He wasn't even being considered to go to the World Cup. I think he's 37-year-old. But the public really pressurized, and the public was not happy. They wanted to see a little bit more experience, too many young players. And then Mahmudullah was added onto the squad. And do you know what the funny thing is? He's probably our best player so far in the tournament. And some ridiculous decisions once again has been made. I don't know why he's coming so late in some of these matches. Obviously against South Africa, I think it came a little bit earlier. But the way Mahmudullah is playing, if you watch him, his technique, he's still so silky with his shots. And when he needs to up the tempo, he's quite capable of doing that. I barely see any other Bangladeshi players with that level of silkiness besides Mushfiqur. Mushfiqur is the other one that I feel like his technique, his batting technique is so sound. And both of these players, they play with a bit of urgency as well. It's not like they're striking at 75 or less than 75. They're striking at close to 90, sometimes even 100. Do you know what I mean? So look, 100% Bangladesh has let themselves down massively. I think our batting lineup, we've not been able to knuckle down. Some of the youngsters that we felt could have had a breakout, World Cup scene. They didn't do that. For example, Shanto is one of them. So much I believed in this, and I still do. I still believe in Shanto so much, but he has really let me down, and he has let the nation down. I mean, 2 golden ducks in this World Cup in crucial moments where he's come in and uh, oh, okay, yeah, sure, no problems. Yeah, two golden ducks, and also for our opener Tanzid, who's had one really good game against India, but besides that, nothing much else to show. Liton Das as well, very erratic. Our middle order seems, besides Mushfiq, besides
Mahmudullah, even Shakib's batting has been. You can finally see his time is coming to an end. He's just not. He's not the same Shakib when it comes to batting anymore. It's very disappointing, honestly, Baba. When I look at someone like Afghanistan, for example, you see the way they are improving every time, and I'm worried that these guys are probably going to take over us very, very soon, and we are going to be left behind. We're going to lose some big players at the end of this World Cup because these players are now too old, and we will have to look forward to newer players. And with all the politics that happens inside our country, with cricket especially, I'm scared where this cricketing nation is moving after this World Cup, and who are going to be the next leaders that's going to stand up. I have some ideas to who potentially could be the leaders, but I'm not sure whether they can fill the boots of some of these legends that are gonna say goodbye after this World Cup. So very disappointed, Baba. So far, I feel like we should have given a lot more competition to some of these top teams, and we've really been a battering ram for them. But we still have matches against Sri Lanka. We've got a match against Australia. We've got a match against a few other nations as well. Netherlands. We need to not only pick up a victory against Netherlands. That's a non-negotiable. Once again, no disrespect. Netherlands have also done, obviously, against Australia. They got battered. Sri Lanka is one that I'm looking forward to. We need to do, and Pakistan as well. Like we need to pick up a couple of victories against top teams to show that so that the fans can get a belief, to something to believe after the World Cup. You know what I mean? Very, very disappointed with this World Cup so far. Guys, the moment that I was waiting for, the Usman bhai, हमको लगा था कि बात होगी कि नहीं होगी उनसे, but there he is, Usman bhai, back from his UK trip. क्या हाल है उस्मान भाई? What's up? कैसे हो? All good, Baba. Hello everyone. कैसे हैं आप? All good, all good. आप कैसे हैं? आपका बाकी क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ के सब पूछ लें. उसी लिए तो बुलाया आपको, उसी के लिए तो बुलाया. Okay. All good, Baba. बस कैसा रहा ट्रिप आपका? ट्रिप अच्छा रहा. बस मैच देखा सिटी के वाला, सिटी और ब्राइटन वाला, और भी देखने थे, लेकिन नहीं मिल पाए. मुझे थोड़ा सा अर्ली आना पड़ा. अच्छा. तो बस अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाए, और वो थोड़ा सा सेट भी नहीं हो पा रहा था. साथ फैमिली ट्रिप किया हुआ था, जो कि नहीं करना चाहिए अगर आप सिर्फ मैच देखने जाते. तो लेसन लर्न. कोई नहीं. नेक्स्ट टाइम. लेकिन अच्छा था ट्रिप. सिटी वाला गेम अच्छा था, मजे का था. ब्राइटन और सिटी वाला तो अच्छा एक्सपीरियंस था इतिहाद स्टेडियम पर. चलिए बढ़िया. चलिए पाकिस्तान की बात करने से पहले लेट्स टेक सम कमेंट्स बांग्लादेश से रिलेटेड. अवनीश सेज बांग्लादेश बॉडी लैंग्वेज इजंट गुड दिस टाइम, दे आर फार बेटर साइड देन दिस. अग्रीड. शमी एंड ऐश, इसकी बात बाद में करते हैं ब्रो. आई डोंट थिंक सो राइट नाउ वी नीड अ लॉन्ग टेल. वैसे इंडिया लॉस्ट टू बांग्लादेश इन जैन 2023. एब्सोल्युटली, इसलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश मतलब आर नॉट दिस बैड अ टीम जो हमको देखने को मिल रहा है अभी. Mahmudullah came in at 8 in one match. It was wrong on so many levels. He is much better than that. हाँ, India वाले मैच में भी I think he came quite late. Yeah. Are you Australian, Miss, with Bengali? Or Miss is Bangstralian. So I'm an Australian citizen. I've been living in Australia since 1997. But yeah, obviously I was born in Bangladesh, Dhaka. I left when I was 6 years old to UAE, and then lived there for 4 years, and then since then been in Sydney, Australia. So a proper subcontinent player. बाबा 2-3 साल बाद मेरा भी जर्मन स्थान हो जाएगा. ओह क्या बात है. जर्मन स्थान हो जाएगा. क्या बात है.
in 2021 T20 World Cup, we had Mohammad Shami, Bhuvi Bumrah. In the 11, still we lost to Pakistan, and everyone thought, "Arey, dekho bhai, T2021 World Cup was a different story. It was not down to the cricketing ability or tactically we had lost it. It was what was happening in the dressing room and the team selection and the kind of preparation that we had before the tournament. So 2021 was a proper, like you could say, preparation mein fault. That was nothing to do with how we approached the tournament, मतलब how we played in the tournament. मतलब we were set for a failure from the off. मतलब आप वरुण चक्रवर्ती को लेके जा रहे हो तो क्या ही आपकी टीम है, वो वाली बात है. खैर, एनीवेज, उस्मान भाई, coming to Pakistan now, the two legends Iffy bhai and Wase Habib had a lot to say after उनकी तो चांदी Pakistan हुई lost. हुई है। उनकी तो चांदी हुई, सही बात है. तो क्या हुआ, मतलब उस दिन 287 भी बना दिए. मैं आपको मैसेज करने वाला था, बट मैं भी ट्रैवल कर रहा था, तो वो मैसेज पहुंचा नहीं आप तक कि इफ अ पाकिस्तान टीम, जिसकी हमने ट्रेडिशनली देखी कि बॉलिंग हैज बीन अ स्ट्रेंथ, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट में वॉट एवर हैपेंस, या ब्रो, whenever you feel comfortable, just let me know, miss. No issues. हाँ, तो उस्मान भाई, मैं ये कह रहा था कि जब अपन पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग हैज़ बीन अ स्ट्रेंथ, और 287 आपने बना दिया. फिर लोग कह रहे थे कि आपने रन कम बनाए, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो 287 भी एक अच्छा टारगेट होता है. और ऐसा नहीं था कि पिच में कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत तो बॉलर्स के लिए असिस्टेंस था. तो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, मतलब क्या? क्योंकि अभी बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन इस चीज का, ये सब बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं T20 के प्लेयर हैं, ये वनडे के प्लेयर नहीं है. ये 4-4 ओवर डाल के बस they bowl 4 overs all the time and they are not used to bowling 10 overs in a game or 12 overs. मतलब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खत्म कर दी पाकिस्तान की. ये डिपार्टमेंट क्रिकेट क्या होती है पाकिस्तान की, कुछ बताएंगे क्या उस्मान भाई? ये मैंने काफी सुना है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दिया आपने. व्हाट वाज दैट, पहले आप ये बताएं. डिपार्टमेंट क्रिकेट बाबा एक मतलब एक ही चीज है, इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा बात होती है। आप डोमेस्टिक की टीम्स बना दी गई थी 6-7 या 6 या 8 आई थिंक मैक्सिमम बना गई थी। डिपार्टमेंट्स पहले ज्यादा होते थे। तो डिपार्टमेंट्स क्या है, बैंक से रिलेटेड, बैंक का एक डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिपार्टमेंट है जो कि किसी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे। तो वो टीम्स बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान के अंदर ना। तो लेकिन आई थिंक दोबारा इसको रिवाइव कर रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को। लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर वो मसला है तो फिर तो पिछले 20-25 साल से डिपार्टमेंटल क्रिकेट चल रही है। आपको जीत जाने चाहिए थे बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप्स। तो ये तो जब कोई मसला आता है ना तो कोई ना कोई उसमें से वो चीज निकाली जाती है कि हाँ ये मसला होगा, वो मसला होगा। हालांकि मसला आपकी प्लानिंग है। मसला ये है कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो आपकी क्रिकेट चलती है। आप मुझे बता दें कैसे आपने मतलब एक्सपेक्टेशन जीत जाए किसी तरह से आप वर्ल्ड कप, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके एक साल के अंदर 3 क्रिकेट बोर्ड, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, चेयरमैन बदल रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताएं 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, मतलब क्रिकेट बोर्ड के 3 दफा चेयरमैन बदलने का मतलब है कि 3 दफा आपकी पूरा थिंक टैंक भी बदल गया। कैप्टन बस सेम है, बट आप लेकिन बाकी सब फंडामेंटल्स थोड़ी चेंज कर देंगे क्रिकेट के. मतलब अगर मान लीजिए नहीं कर बीसीसीआई देते अगर हैं ये। मैं आपको तो बताता हूँ। आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे. लाइक आई वाज टॉकिंग टू मिस भाई द अदर डे आल्सो कि अब हम्म। बांग्लादेश क्रिकेट भी ना सेम चीज से गुजर रहा है. मतलब द Hmm. पॉलिटिक्स इन द बोर्ड, द वे द डोमेस्टिक क्रिकेट इज बीइंग रन. तो मतलब सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है क्या उस्मान भाई, कि मतलब जो बाबा आ रहा है वो अपनी. वो तो एक चीज ट्राई की गई थी, जैसे कोई आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है, उनकी फर्स्ट क्लास टीम्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये चीज ट्राई की गई थी कि हम टीम्स कम करेंगे ताकि क्वालिटी ज्यादा हो। लेकिन क्वालिटी तो तब ज्यादा होगी ना जब आप मेरिट लेके आएंगे। टीम्स आपने कम कर दी लेकिन आप मेरिट लेके नहीं आए, तो वही लड़के खेल रहे हैं, नए लड़के आ नहीं रहे। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट ये होती थी कि वो जो सिफारशी होते थे वो तो खेल लेते थे सारे, लेकिन साथ साथ टैलेंट को भी चांस मिल जाता था, बिकॉज आपके पास मतलब सीट्स ज्यादा होती थी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं, तो वो एक बैकलैश आया था। लेकिन प्रॉब्लम, आप जो मर्जी सिस्टम ले आए, लेकिन जब तक ऑनेस्ट लोग उसको चलाने वाले नहीं होंगे, मतलब ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमने उसको आगे लेके जाना है। जैसे फुटबॉल, मैं पाकिस्तान फुटबॉल की भी सेम ही बात करता हूँ। आप जो मर्जी बंदा ले आए, लेकिन ऑनेस्ट लोग नहीं होंगे, करप्शन होगी, वो सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारी पोजीशन है, हमको पैसा मिल जाए, पैसा लेते हैं, अपना टेन्योर खत्म होता है और चलते बनते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मेन तो चीज ये है। अब मुझे बता दें, इंजमाम उल हक कितनी दफा एज अ चीफ ब्रिलियंट बैटर, कितनी दफा एज अ चीफ सेलेक्टर फेल हो चुके हैं, वो कैसे आ जाते हैं दोबारा? अकाउंटेबिलिटी किधर है?
मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा वही चीफ सेलेक्टर आ जाता है, वही लोग दोबारा आ जाते हैं। उनकी अब वकार यूनस है, वो फेल हुए थे, ठीक है, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरा जो है वो बैकलैश आया था। अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा वो दोबारा जो है वो बॉलिंग कोच बने हुए थे पाकिस्तान के। अकाउंटेबिलिटी किधर है? मतलब उनसे किसने पूछा कि आपने जो पहले आपका टेन्योर था वो फेलियर था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ठीक है। और मिकी आर्थर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी पाकिस्तान ने, वो जिस तरह जीती थी वो सबको पता है, वो क्रेडिट है उसका मिकी आर्थर का, सरफराज का भी। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देखें, क्या क्या चीजें बनी, ठीक है, कैसे टीम खड़ी हुई, नहीं हुई। तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर दोबारा आपने एकदम से लाके मिकी आर्थर को डायरेक्टर बना दिया। वो क्या करता है, वो कभी बाहर से बैठ के, ज्यादातर तो उसने बाहर से बैठ के जो है वो कोचिंग कर रहा होता है। हेड कोच आपका है जिसको जिसको लोगों का नाम ही नहीं पता, क्योंकि मिकी आर्थर जो है वो आ जाते हैं वर्ल्ड कप के दौरान, जी मैं आके एक्शन मारूंगा ड्रेसिंग रूम में, ठीक है। अब मुझे बताएं मिकी आर्थर का क्या काम है ड्रेसिंग रूम के अंदर? तो ये सारी चीजें, फिर इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर हैं, वो अभी इंडिया पहुंचे हुए थे बैटिंग बताने, उनका काम ही नहीं है। तो लोग डोमेन में नहीं रहते। अब मुझे पता कौन चीफ सेलेक्टर है आपका? आई थिंक अजीत अगरकर है ना आपका, इंडिया का। आपने देखा उनको ड्रेसिंग रूम में जाके बॉलिंग बताते हुए लोग को? ये तो मजाक है, खत्म ही नहीं होता। जब इतनी ज्यादा चीजें, मिकी आर्थर कुछ कह रहा होगा, हेड कोच कुछ और कह रहा है, मॉर्ने मोकल कुछ और कह रहा है, ठीक है, फिर इंजमाम पाई भी आ जाते हैं बीच में। तो फिर इफी और वासे भी सही रहते हैं इस टीम के लिए। Osman, hey, I wanna ask you a question before I leave. First of all, assalamu Sure, alaikum, brother. Wonderful. I have followed Pakistan team since I was a kid. You know, obviously back then, you know, Bangladesh only came into the frame quite recently in cricket when you look at the historical timeline. So the team that obviously Australia was a big team that I used to follow, of course, after Bangladesh. But Pakistan is one that I was always very, very keen when I was a youngster, I suppose. What I've seen with the Pakistani team since I was a kid growing up, I've always seen an aggressive unit. I've seen the likes of, you know, Wasim Akram, Wakir Yunus, and many other legends that has, you know, gone by. And obviously in recent times as well, there's been some fantastic players. I just feel, and this is what I want to hear from you, and I know there's a lot of talk that's been happening on social media about Babar Azam and his captaincy and his way of leading the team. I just don't see that same aggression. I don't see that in your face, you know, attitude that you know, scaring, intimidating the opposition. I feel like Pakistan is they're just flowing with the wind. You know, that I don't know the exact word, but that charisma, that flavor is not there. Do you feel the same way, or the intensity is not there? Like teams are not scared of Pakistan's bowling anymore. Like, yeah, I mean, look, all of the things that we talked and that Osman Bhai has said in regards to the political side and the other sides that obviously the fans, you know, what can we control, right? You know, the coach and backroom staff and whatnot, and of course, all of that needs to work out. But what Babar Azam has with him, he can control that and he can create a far more fearsome attitude. I feel like that's missing, and I want to see what Osman Bhai has to say about that. I think I do agree. So, but if you basically play all these players in T20, Baba, again the same point, you will see a different attitude. But again, this is not only the problem. The main problem is that the Pakistan team, Babar Azam is definitely not an aggressive captain. In PSL also, he was the captain, but he was not able to win anything. And the same criticism was there also. But he is the best batsman. And 2-3 years back, that was the best possible option for Pakistan cricket. So I am not going to criticize that why Babar is the captain of this Pakistan team, because that was the only best option at that point. And obviously, you have to continue until the next World Cup, so that you give him a proper chance. And this is what Babar is getting. I think Pakistan is not in this right frame of mind coming into the tournament. Fakhar Zaman was out of form. He was the aggressive batsman in the top 4, so he has been out of form for a long time. That is one point.
Naseem Shah was the aggressive one. If you see in Asia Cup and even before in the last 1.5 year, he was the aggressive bowler who used to look into the eyes and actually also perform at the same time, right? Yeah. And maintain that line and length that we used to see before with Pakistani bowlers. So that one ingredient is missing. And Shadab, who is by nature an aggressive batsman and bowler all rounder, also he is also massively out of form. So there are factors. I think what I think the problem is that Pakistan have have not identified that the players are out of form, and they continued with that. They Hmm. must so the Just like best Bangladesh. possible, Seems. yeah, the best possible thing you can do is to play players that are in form at the right time. So I think this is the mistake that they did so far. उस्मान भाई, do you think Pakistan is still in that 90s frame of mind? मतलब 90s frame of cricket होता था ना, जैसे मतलब you trust your players no matter what happens, but the talent of that 90s Pakistan team was such top notch कि मतलब even the out of form players, out of like if you've got 5 out of form players but two of those are match winners on their day, they'll just rip the side apart, and if all of Ba- them are playing then the team is best. बाबा, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के ना चांसेस बहुत कम है हम्म क्वालिफाई करने की, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ने जिसने नेदरलैंड्स को हराया, हम्म क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैच है नहीं, इंग्लैंड से है, साउथ अफ्रीका से है पाकिस्तान का, बट दिस इज अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान टू मेक अ कमबैक. ठीक है. Exactly. Yeah. ठीक है, तो ये यही वो सिचुएशन है जो हर वर्ल्ड कप में बनती है. 87 को देख लें, हम 92 को देख लें, ये जीतने की नहीं, एक कम बैक करने की. 2019 देख लें, इस सिमिलर सिचुएशन थी जहां पे पाकिस्तान को फिर तकरीबन सारे मैचेस जीतने थे. बट आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान विल क्वालिफाई. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, आई रियली रियली थिंक, जो मैंने अभी तक देखा है, आई नो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को हराया और अब नेदरलैंड्स को हराया, लेकिन आई वुड स्टिल से कि पाकिस्तान फिलहाल डिजर्व नहीं करती जो है वो क्वालिफाई करना. बट ऑब्वियसली बड़े मैचेस आ रहे हैं आगे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका. अगर आप इनको कंसेक्टिवली हरा देते हैं तो इवेंचुअली फिर वो पार्ट जो है, पहला पार्ट जो है वो लोग भूल जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यार ये देखो बड़ी टीम्स को हराया है, पाकिस्तान इज बैक. लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पहले क्या होता था, पाकिस्तान जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी होता, पाकिस्तान हार जाती, लेकिन आपको दिखता था कि यार ये टीम कर सकती है ये. लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि डिसोरिएंटेड सी टीम लग रही है. ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो कि हमेशा न्यूज आती है जब आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की चल रही हो. बाबा, प्रॉब्लम ये है कि ये पिचेस जो है ना, आपके स्पिनर्स आउट ऑफ फॉर्म है, पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम. दूसरा ये है कि इन पिचेस के ऊपर अभी तक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को ये समझ ही नहीं लग पाई. हसन अली को तो मैं एक साइड पे रखता हूँ ना, वो 132 133 के ऊपर लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, वो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं. लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को समझ नहीं लग रही कि वो वाली पिचेस नहीं है जहां पे आप आगे यॉर्कर लेंथ के ऊपर पहले 2 ओवर के अंदर बॉल फेंकेंगे और आपको समझ लें 90% ऑफ द टाइम आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको लेंथ लाइन के ऊपर जो बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं ना, ये इवन जो रबाडा बॉलिंग कर रहे हैं, और भी प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर, आपको वहां पे फोर्थ स्टंप के ऊपर बॉल रखनी है. वहां से मूवमेंट बाहर जाएगी हल्की सी, वहीं से अंदर आएगी. और यहाँ पे अगर आप मार्क वुड की एग्जांपल ले लें, हारिस रऊफ को भी मैं मार्क वुड से कंपेयर करता हूँ, दोनों को मार पड़ रही है. वो क्या कर रही है, लाइन नहीं मेंटेन कर रहे, वाइड तेज तेज तेज. और उसके अलावा कोई बीच में स्लोअर वन नहीं है. मैं हारिस रऊफ का पिछला मैच देख रहा था, उसने शुरू के 3-4 ओवर के अंदर एक भी स्लोअर वन नहीं मारा. ठीक है, या तो वो तेज मार के मार खा ही जा रहा है. टेपिया है क्या वो? टेपिया, यही माइंडसेट है. हाँ, इसलिए टेप बॉल क्रिकेट के अंदर स्लोअर वन का कंसेप्ट नहीं ना होता, लेकिन यहाँ पे तो है ना. अभी इतनी क्रिकेट खेल ली, 3-4 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, उसको अब तक तो समझ लग नहीं. वो मोरने मोर क्या कर रहा है, वो क्या बता रहा है उसको, वो अन्य वहां बताई जा रहा है, भाई तुम्हारी जा बाउंसर. तो रोहित शर्मा को, जो कि बेस्ट प्लेयर है पुल शॉट का, बाबा आपको याद होगा हमने बात की थी, भाई आपने एक ट्राई कर लिया, आपको पड़ गया. आपने रोहित शर्मा को आउट करना है तो आपने सामने से आउट करना है, अच्छी लेंथ से आउट करना है. आप पुल पे नहीं करोगे. हसन अली 130 की पेस से उसको पुल के ऊपर बॉलिंग कराई जा रहा है. तो ये गेम अवेयरनेस नहीं है इनके ऊपर, या तो पूरी फिटनेस नहीं है जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं. ठीक है, अब आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम क्या है. शाहीन शाह अफरीदी थ्रू आउट द टूर्नामेंट फिटनेस के अंदर आ रहा है, अब उसकी 41-40 के ऊपर जाके हिट कर रही है बॉल. तो ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नसीम शाह अवेलेबल नहीं है, शाहीन शाह कंप्लीटली फिट नहीं थे. ठीक है, वो थ्रू
थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऐसा ऐसा फिटनेस गेन कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन है आपकी वर्ल्ड कप में, और आपके पास अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन ही कोई नहीं है खिलाने के लिए इनके अलावा। Harris Rauf, Usman Bhai, is a strange one. He's bowling like he's as if in Australian pitches. He plays a lot of एग्जैक्टली cricket in Australia, and his level of pace, you get a lot more purchase out of the pitch if you play here in Australia. He's applying the same logic in India, and he's getting absolutely smashed. Same with Mark Wood as well, as you said. एग्जैक्टली मैंने अभी आई थिंक कल या परसों जो रिव्यू अपलोड किया था ना, उसके अंदर आई एग्जैक्टली सेड द सेम थिंग कि ये ऑस्ट्रेलिया की पिचेस नहीं है, ये इवन इंग्लैंड की भी नहीं है, जहां पे आप Exactly. शॉर्ट बॉलिंग करोगे, ठीक है, और आपको एक एक एक्स्ट्रा निप मिलती है उन पिचेस से, Yeah. जिसकी वजह से जो बैट्समैन है वो जो है आप पुल मारते हुए आउट हो जाता है, राइट, या फिर थर्ड मैन के ऊपर आउट हो जाता है, इतनी पेस के साथ जो है वो बॉलिंग ग्राउंड होती भी है। बड़े हैं ना। हाँ, ग्राउंड भी बड़े हैं, एग्जैक्टली कैच हो जाते हैं। आपने देखा होगा हारिस रऊफ की अक्सर विकेटें होती हैं कि वो शॉट मारते हैं, पूरी शॉट लगती नहीं है, और वो वहां पे जाके मतलब थर्ड मैन के ऊपर या फिर आउट, बैंगलोर में आप वो कर ही नहीं सकते जो हारिस रऊफ हाँ, उस दिन कर रहा था ना सामने से ऑस्ट्रेलिया भी के। आउट करता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना, सामने से भी आउट करता है फिर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ ना आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। हारिस रऊफ जब भी वो लेंथ के ऊपर बॉल करता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको खेलना उस पेस के साथ। जितनी भी आप बॉल्स निकाल के देखें, जहां पे भी उसने लेंथ हिट की है फोर्थ स्टंप के ऊपर, लेकिन वो कंसिस्टेंटली वो काम कर ही नहीं रहा। उसी पॉइंट से उसको स्लोअर वन भी मारना है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो शॉट मारता है जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर, और उसको मार पड़ती है तो फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है, और फिर वो कहता है कि मैं दूसरा भी तीसरा भी मारूंगा, मैं इसको यहीं पे आउट करूंगा, जो कि है ही नहीं इन पिचेस के ऊपर। आप यहाँ पे आउट नहीं कर सकते उसको बार बार सर के ऊपर बॉल मार के। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ की प्रॉब्लम चल रही है। मैं ये बार बार कहूंगा कि हारिस रऊफ आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है कि भाई कभी कभार 4-5 5-6 6 ओवर आपको लेंथ के ऊपर भी डाल के निकालने पड़ते हैं। तो ये उसको चीज करनी है और फिर विकेट मिलेगी। आई थिंक पता नहीं किसी फास्ट बॉलर ने यही कहा था, शायद वसीम अकरम ने कहा है या वकार यूनिस ने कहा है कि इन पिचेस के ऊपर आपकी जो बेस्ट बैट है ना, वो है लाइन लेंथ, फोर्थ स्टंप। Correct. यू हैव टू डू मैक्सिमम टू अचीव दैट। अगर आपने नहीं किया तो आपको इस पेस के साथ स्पेशली मार ही मारा है, मतलब आपको पड़ती जाएगी, आप मार लो जितनी मर्जी। मैं आप गारंटी देता हूं, मैं हारिस रऊफ 6 की 6 शॉर्ट बॉल मारे, ठीक है, वो सर के ऊपर से गुजर जाए अलग बात है, लेकिन उसको कम से कम 4 या 5 में से 4 दफा जो है वो उसके ऊपर चौका या छक्का ही पड़ेगा। ये इसको समझ ही नहीं लग रही है अभी तक। तो यही तो हैरानी है कि इस लेवल के ऊपर इनको समझ नहीं लग रही है बात की। और मोर्ने मौकल वहां पे बैठे हुए हैं, इतना एक्सपीरियंस वो प्लेयर है, वो सारी आईपीएल भी उसने खेली है, इंडिया के अंदर भी खेला है, या तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा या फिर ये कर नहीं रहे, तो कुछ समझ नहीं लग रही। बाकी आपके स्पिनर तो आउट ऑफ फॉर्म बाबा। देखें, ये वर्ल्ड कप ना अच्छे स्पिनर्स के बगैर जीता नहीं जाएगा। पाकिस्तान को सीधी सी Very बात true. है, कोई इंजरी फेक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल चांस ये कि इब्रार को ले आए, बिकॉज ये नहीं हो पा रहा है इनसे, सीधी सी बात है। बाबा मुझे बताएं, लास्ट टाइम कब हुआ था कि पाकिस्तान के मेन बॉलर्स पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर स्पिन बॉलर्स उनके पूरे 10-10 ओवर ना हुए हो। सही बात ना वो ऊपर से बाबर की कैप्टनसी आप देखें, रन बॉल चाहिए, ठीक है, लास्ट मैच के अंदर, और वो कभी शराब को लेके आ रहा है, मैं पूरे 50 ओवर करा दूं। ये मैं आपको याद होगा एशिया कप के अंदर भी हमने डिस्कशन की थी, ठीक है, कि जब आपको एक विकेट चाहिए, आपको डेस्परेटली विकेट के लिए बगैर आप जीतेंगे नहीं, आपको 2-2 3-3 विकेट चाहिए। 4-4 ओवर उसने, 2 ओवर हसन अली के थे, 4 ओवर शाहीन के थे, 4 ओवर हारिस रऊफ के थे, वो वहां पे शादाब को लेके आ रहा है बीच में। उस हम आखिरी 10 ओवरों की बात कर रहा हूं मैं। भाई तो 50 ओवर तक जाएगा तो मैच तो खत्म है ना। उसकी सोच ही यही है कि वो 50 ओवर, भाई वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मैं बिल्कुल भी उससे वो उस पर क्रिटिकल नहीं हो रहा मैं। पाकिस्तान ने कम स्कोर किया था, लेकिन फिर भी ये ऐसी भी विकेट नहीं थी बाबा कि आप 280 पे 2 आउट करा दें, जो कि वीकनेस है अफगानिस्तान की उनकी बैटिंग। Miz has to leave. He's got a stream. So, guys, please do make sure that you have subscribed to the other side of the coin. And it's always
A pleasure to discuss cricket with Miss. Always fun, and we'll keep on doing this throughout the course of the World Cup. Miss, before you go, we have to do one when Bangladesh plays Pakistan. I need to have Osman Bhai on the channel. Bangladesh versus Pakistan, the preview must happen. I think that's the only hope for both of us to win that game, huh? For both of us, whoever wins that wins the World Cup. That's my World Cup. Before you go, I think the Miss, situation will be like that, because I think it will be most probably the last game or second last game for both Bangladesh or Pakistan. Exactly. Playing for pride. Okay, Miss, before you leave, are Australia back? Are they in the semi-finals? Will they be in the semi-finals? I told you last Excuse me, Baba. Be very, very careful about Australia, because they are on the way back. Look, I know it's Netherlands, but the way they absolutely undressed and nanga kar diya. I'm not very fluent in Hindi or Urdu, but I can say a few things. Honestly, they absolutely demolished Netherlands. Whoever now faces Australia, they're up for a challenge. So look out for. I think definitely they're in the semi-finals. I can't see how Australia loses any matches. I think they've got England, they've got New Zealand. India. No, India they've lost. India they've already lost. Yeah. I think India will already. They've already taken it. I think the challenging one. I think the challenging one could be maybe Afghanistan. But they have to play England, New Zealand, Afghanistan, or who's the fourth team? Bangladesh. They should take care of Bangladesh. Don't worry. So I think the hard one probably is Afghanistan. I'm actually thinking Australia, Afghanistan might be a वैसे अफगानिस्तान भी कर सकती है क्वालिफाई अगर 2 मैच और किसी तरह निकालने में अपनी टीम से. Yes, absolutely. I was surprised कि अफगानिस्तान बांग्लादेश से हार गई in the manner in हाँ वो मेन miracle. Absolutely. वो वाला मैच अगर निकाल लेती ना किसी दिन अफगानिस्तान तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं उनके. If that match happens now, Afghanistan wins, because it was the first one. Maybe that's why. But yeah, very, very interesting, man. Very interesting. But yeah, I think Australia definitely guaranteed to be in the semi-finals. And whoever faces Australia in the semi-finals, don't take them lightly. Do not take them lightly. I think India ही face करेगी, 4th ही कर रही है शायद Australia finish. Osman bhai, I want to see India versus Australia semi-final. I want to see that. I want to see India versus India versus Afghanistan semi-final. यार कोई पाकिस्तान का भी नाम ले लो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाबा. अभी करते हैं और डिटेल में बात उस्मान भाई कि मुझे क्यों लग रहा है पाकिस्तान का मुश्किल है सेमीफाइनल. बट ठीक है मिस ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आई नो यू गॉट टू लीव. Thank you so much. But it's no problems, man. It's been a fantastic conversation. I'm sure we're going to keep doing this. Good luck to everyone, and to the live chat. Make sure you smash the like button for Drog Baba, and subscribe to his channel. Subscribe to my channel as well if you want to hear some Chelsea conversation. I shall see you guys very, very soon. Take care. Bye, Baba. Take care. Bye, Osman bhai as well. Take care, miss. तो उस्मान भाई अब आओ असली पे. मतलब अब क्या व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट. मतलब ठीक है, वो कुदरत का निजाम बहुत बार हमने सुन लिया, लेकिन वो निजाम के लिए ना कुछ पॉजिटिव्स दिखते हैं हमको हर बार. बट अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. जैसे T20 वर्ल्ड कप में आप इंडिया से हारे हैं तो आपने अच्छा खासा वो मैच डोमिनेट किया था. वो तो विराट कोहली की बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी, तो आपको दिख रहा था. हाँ, मैजिक हैपेंड दैट डे. हाँ, मैजिक हैपेंड, राइट. मतलब अभी क्या है, इट डज नॉट टेक टू मच टू बीट पाकिस्तान. मेरा पॉइंट ये है. मतलब हाँ, डेफिनेटली आप अपने प्लान के हिसाब से खेल रहे हैं तो आप जीत जाएंगे पाकिस्तान के. अभी ऐसा लग रहा है. डेफिनेटली जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, वो वाला मैच अच्छा खेले थे, जिम्बाब्वे वाला बुरा खेले थे, अपसेट हो गया था, लेकिन बाकी आपने फिर दोबारा मैचेस जो है वो निकाल दिए थे. तो मतलब ऐसा नहीं था कि जब व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट तो आपने वो निकाल लिए थे. और आप बहुत ज्यादा बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जितना मर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ भी डिफेंड नहीं कर सकती. मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग 320-30 भी हो जाता ना तो शायद डिफेंड ना कर पाते वो इस विकेट के ऊपर भी. तो ये प्रॉब्लम है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है. अब मैं बैटिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. आई नो उनको इस पिच के ऊपर भी 300 से ज्यादा बनाना चाहिए थे, बट बाबा अगर वर्ल्ड कप के अंदर प्रेशर गेम के अंदर 280, चेन्नई की सेम पिच नहीं थी, अगर बॉलर्स के लिए इनफ नहीं है तो वो 300 भी इनफ नहीं होना था. ठीक है, जिस तरह वो खेल रहे थे.
तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग मैसिवली उनको लेट डाउन कर रही है। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 300 बना लिया था, वी वर वेरी क्लोज टू चेजिंग। फिर आई थिंक नीदरलैंड्स में थोड़ा सा आपकी बैटिंग स्ट्रगल की थी, आपने श्रीलंका के अगेंस्ट 350 बना लिया ऑलमोस्ट। तो हाँ, इंडिया वाले मैच में आपकी मैसिवली जो है वो बैटिंग फेल हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का बॉलिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को भी कि ये सेमीफाइनल्स तक इस पोजीशन, जो कि और कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, समझ लें कि खत्म हो चुका हुआ मामला पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट, बिकॉज स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की जो कल की विन थी ना, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैच जीत जाता है और पाकिस्तान भी अपने सारे मैच जीत जाता है। इवन ऑस्ट्रेलिया आई थिंक एक मैच हार भी जाता है, ठीक है, हार भी जाता है अगर एक ऑस्ट्रेलिया मैच, फिर भी वो रन रेट पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच हारने पड़ेंगे, और 2 मैच मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया हारने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे खासे अपने टफ मैच खेल लिए हैं। उनके साथ अफगानिस्तान का, विच आई स्टिल एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया निकाल लेगी, ठीक है, बांग्लादेश वाला भी ऑस्ट्रेलिया निकाल लेगी, और बाकी 2 मैचेस है उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक आध ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी हरा देगी, जिस तरह की इंग्लैंड की फॉर्म चल रही है। तो चांसेस मतलब समझ लें कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, और कॉन्फिडेंस, आपकी बॉलिंग, या तो आपकी बॉलिंग अच्छी कर रही हो ना, क्लोज मैच हार रही हो, तो आप कहते हैं हाँ नहीं यार ठीक चल रहा है, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप था। आप वो वेस्ट इंडीज वाला मैच जो है वो बहुत ही बुरा खेले थे, वरना आपकी बॉलिंग इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही थी 2019 के वर्ल्ड कप में, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि ओवरऑल टीम अच्छी है। तो अभी तो कॉन्फिडेंस बहुत ही वो है, क्या नाम है, डाउन होगा। और बॉलिंग ने बहुत मैसिवली, मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी बुरी, कि 2015 वर्ल्ड कप में आपकी बैटिंग बहुत फ्लैट थी लेकिन आपकी बॉलिंग फिर भी अच्छी थी। कुछ ना कुछ आपको वो वहाब रियाज, कोई ना कोई 11 वर्ल्ड कप के अंदर आपको बड़े अच्छे स्पेल्स देखने को मिले थे, सईद अजमल से, उमर गुल से, वहाब रियाज से सेमीफाइनल के अंदर। इस बार अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक जो मुझे चीज लग रही है ना कि मतलब ना फर्स्ट चेंज कोई विकेट ले पा रहा है, स्पिन तो बिल्कुल इनफेक्टिव है ही। आपने सारे पॉइंट्स ही बोल दिया। हारिस रऊफ को जो मार पड़ रही है शुरू में, उससे पूरा बॉलिंग अटैक जो है अनसेटल हो जा रहा है। थोड़ा बहुत जो करने की कोशिश करता है, शाहीन अफरीदी को भी ऐसा, मतलब जब वो सेकंड स्पेल में आ रहा है ना अपने, तब विकेट मिल रहे हैं उसको। इंडिया के पहले में अगेंस्ट नहीं भी, मिल रहा है, हाँ, इंडिया के और अगेंस्ट भी वहां रोहित पहले शर्मा में के मिला तो साथ। वो क्या छोड़ दिया उसने। हाँ, तो ये क्या फील्डिंग तो क्या वो तो खैर। फील्डिंग तो यार, वो वसीम अकरम ने कहा इतने बड़े बड़े इनके मुंह हुए में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता इनका, इनसे क्या फील्डिंग होनी है। मुझे पता है वो इमाम उलग की बात कर रहा है। हाँ, इमाम उलक मतलब उस वो बॉल के ऊपर डाइव मारता है। वो इंडिया वो वाले ना मैच में याद है वो आपको, उस स्क्वायर कट मारा रोहित शर्मा ने हाँ, और वो बॉल बाउंड्री के रोप ऊपर, उसने और बॉल पे तीन डाल चार दी। दफा हो चुका है, 3-4 दफा हो चुका हुआ है ये। और वसीम अकरम ने आई थिंक ये चीज आइडेंटिफाई की थी कि ये ना ग्लासेस पहनता है, तो इसको लेंसेज पहनने चाहिए। तो सुनने में आया था कि ये कंफर्टेबल नहीं है लेंसेज के ऊपर। तो वसीम अकरम ने बात की कि भाई आप प्रोफेशनल हैं, हम भी कंफर्टेबल नहीं थे, मैं भी पहनता था, क्योंकि ग्लासेस से आपका विजन, अगर ग्लास, आपको पता ग्लासेस जब आपने बाबा पहनी होती है, आप लेफ्ट देखे ना एकदम से, तो हम्म, आपको ग्लासेस के थ्रू थोड़ी नजर आता है, तो हम्म, आपने बॉल के ऊपर से ही छाल मारनी है। हम्म, तो सही बात। ये इनको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म पता नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है इनको। अरे एक और जो स्टैट था जिसकी बहुत बात हो रही थी कि 2023 में इस मैच के पहले, अफगानिस्तान वाले मैच के पहले, एक भी छक्का नहीं मारा था पाकिस्तान ने पावर हाँ, प्ले में। अब मारा है पर हाँ, 12 पता नहीं कितनी, 1200 हाँ, बॉलों के बाद पता नहीं कितनी हाँ, बॉलों तो पावर प्ले के अंदर। इंटेंट की कमी तो है ही, मतलब जो फखर आपके। जमान आउट ऑफ फॉर्म है बाबा, यही हम्म, सबसे बड़ा मसला है। और इन्होंने मसला क्या है, आप मुझे बताएं, अगर फखर जमान की जगह कोई इंडियन बैटर होता जो कि पिछले 20-25 मैच से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या वो उसी के साथ लगे रहते 20-25 मैच गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, वो कम से हम्म, कम लगे रहते। शायद फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं कि रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से कोई एक प्लेयर होता, तो वो 20 मैचेस से नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता, तो या तो किसी और को चांस मिल गया होता, या एटलीस्ट आपने किसी और को कम से कम 10-15 मैचेस दिए होते, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे कि आपको क्रंच मोमेंट के ऊपर डिसीजन लेना पड़े तो आप ले सको, ठीक है। अभी अब्दुल्ला शफीक जो कर रहा है ना, ये समझ लें कि इसमें सिस्टम का कोई कमाल नहीं है, कैप्टन का कोई कमाल नहीं है। वो मैचेस खेल, आपको पता है एक मैच उसने खेला पिछले, मेरे ख्याल में पिछले 15-20 मैचेस के अंदर, वो तो बस ये है कि वो परफॉर्म कर गया, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, वरना इनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। लेकिन लाइक टू लाइक कोई नहीं है, लाइक टू लाइक होना चाहिए ना। फखर जमान अगर बाहर जा रहे हैं और आपके 4 ऊपर के बैट्समैन, इवन मैं 5 की बात करूं, एक जैसी क्रिकेट खेलते हैं,
तो आपको कम से कम एक फखर जमान की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो रेडी करनी चाहिए थी। अब्दुल्ला शफीक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है फखर जमान की, यही तो प्रिपरेशन है इनकी। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मुझे बता दें, इन 3 बॉलर में से कोई किसी को मार पड़ रही है, नसीम शाह की कौन सी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रेडी की हुई थी? जमान खान नहीं है उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, हसन अली नहीं है उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। तो यही तो चीज है जो इनको समझ नहीं लगती, जो इन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई पूरे वर्ल्ड कप की। और दूसरी यारियों के ऊपर बनी हुई ये टीम, ये मैं 100% गारंटी आपको बात कहता हूँ। शाहनवाज धानी इतने अरसे से आपकी टीम के साथ हैं, और हसन अली 2 साल से आपकी टीम के साथ ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है बाबर और शादाब वगैरह से। शाहनवाज धानी के ऊपर बॉब्जी कैसे है, हसन अली आ गया? हाँ हम तो किंग बोलते हैं उसको, हाँ, तो बॉब्जी किंग द बोलते, किंग। ये इन्हीं चक्करों पे, यही मूड बॉब्जी पॉलिटिक्स द जो किंग, करके। किंग हाँ, संभाल लेगा। वो आपने कोई नहीं, किंग को बोल दो, मसला सही हो जाएगा। किंग ये उसने मसला सही करवा बॉब्जी लिया था अपना। तो ये इस तरह टीम में आते हैं ये लोग। तो अब बॉब्जी द किंग। बाबर आजम का ही क्रिटिसिज्म है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। शादाब, जब मार पड़ रही होती है हारिस रऊफ को 10वें 11वें ओवर में, कौन आता है? किसको आना चाहिए आप बताएं? 2 स्पिनर खेल रहे हैं, किसको आना चाहिए 11वें ओवर में मुझे बॉल तो करने के लिए? उस्मान भाई शादाब को। ये वो उसामा मीर को टैक्टिक, देता मार खाने के लिए। उस्मान भाई मुझे तो ये टैक्टिक ही समझ नहीं आई, 2 लेग स्पिनर सेम प्रोफाइल के 2 बॉलर कैसे खिला सकते हो आप? बुखार करा दिया उसको जानबूझ के, क्योंकि आपने शादाब को ड्रॉप नहीं करना था। आपने ये मैं आपको गारंटी बात देता हूँ, नवाज को जानबूझ के बुखार, हालांकि हाँ, शादाब और नवाज में से थोड़ी बेहतर बॉलिंग नवाज ही कर रहा था। अब देखो, अब मैं इंडिया का एग्जांपल लूं जैसे, ठीक है, तो आपके 2 अलग प्रोफाइल के स्पिनर खेलते हैं, ठीक है। आपके कुलदीप यादव हैं जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, और आपके जडेजा हैं जो जडेजा फिंगर स्पिनर हैं, ठीक है। और तो अश्विन दोनों, ऑफ स्पिनर है। अश्विन ऑफ स्पिनर है। चलिए आप कह सकते हैं कि अक्षर पटेल फिट होते तो अश्विन से पहले उनका ही सिलेक्शन होना था, वो और जडेजा सेम टाइप के बॉलर। लेकिन आपकी जो प्लेइंग 11 में आप 2 सेम टाइप के बॉलर, मतलब शेन वॉर्न और स्टुअर्ट मैकगिल, बहुत मतलब बहुत रेयर होता था कि एक साथ खेलते थे यार, नहीं होता ऐसा। बाबा कॉम्बिनेशन बनता यही था कि शादाब और उसामा मीर में से कोई एक हो, दा, नवाज दा, हो दानिश और दाने, अबरार हो। दानिश कनेरिया कह रहा था कि मुझे इसलिए नहीं खिलाया जाता था कई बार, क्योंकि सब कहते थे कि शायद अफरीदी टीम में है, तो एक लेग स्पिनर है तो आपको कैसे खिला सकते हैं। तो कभी कभी तो इसलिए नहीं खिलाते थे, कॉम्बिनेशन के चलते। बिल्कुल, तो ये तो डेस्पिरेशन वाली और ओसामा मीर तो भाई वो कैच छोड़ा उसने, वो जब से ऐसा लगता है भाई, मतलब घबराया हुआ सा है वो, कि पता नहीं क्या हो गया उसके, कोई अग्रेशन बाबा नहीं, यही कुछ तो नहीं। आपने यही तो काम होता कैप्टन का। अब देखिए हाँ, ना, उसका उसका उसने कैच छोड़ा हुआ था, ठीक है। हम्म, अब 11वां ओवर ही था या 12वां ओवर था, हम्म, आपका मेन एक्सपीरियंस बॉलर जो पिछले तकरीबन 5-6 साल से खेल रहा है, आप उस पोजीशन पे शादाब का बॉलिंग करना बनता था या उसामा मीर का बॉलिंग करना बनता था? उसने हम्म, क्या किया? यही तो कैप्टनसी होती है। उसने उसका कैच छोड़ा, लो ऑन कॉन्फिडेंस, जा तू मार खा, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, इसको मैंने बचा। हम्म, ये कैप्टनसी होती है। हम्म, मतलब ये किसी भी लेमैन को भी नजर आ रहा है कि ये ज्यादती कर रहा है उसामा मीर के साथ और शादाब को बचा रहा है ये। हम्म, और शादाब देखें फिर खेल जाएगा, क्योंकि बैटिंग कर लेता है। उसका क्या करना आपने बैटिंग का? पिछले मैच में, अफगानिस्तान के मैच में उसने बैटिंग कर ली थी। भाई हमको बैटिंग चाहिए नहीं, आपको मेन। बाबा ये इन्होंने सिलेक्शन भी गलत की हुई है। उसामा मीर ये शादाब को आउट नहीं कर सकते थे, हालांकि वो आउट होता था, उसामा मीर नहीं होता था स्क्वाड से आउट। शादाब को ये आउट नहीं कर सकते थे, और अगर उसामा मीर को आउट करते तो और क्रिटिसिज्म आना था, उसको तो खिलाए यार, आपने बाहर कर दिया। तो ये फंस हम्म, गए थे दोस्ती यारी के चक्कर में, और फिर इस चक्कर में अबरार जो है वो अंदर नहीं आया टीम के। तो ये हम्म। दोस्ती यारी, अब हसन अली के केस में प्रॉपर बॉलर नहीं लेके आए, तो ये दोस्ती यारी के चक्कर में फंसे हैं। अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, मतलब एक मिनट बाबा। इस, हाँ, आराम से उस्मान भाई, किंग कर लेगा बॉब्जी द किंग। यार मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आपका इफ्तिकार इज योर बेस्ट स्पिनर, मतलब अगर हम बात करें तो इफ्तिकार ने अभी तक सबसे बढ़िया बॉलिंग कराई है एज फार एज द स्पिनर्स आर कंसर्न। मतलब वो इतना नहीं पिट रहा है जितना बाकी लोग पिट रहे हैं, या मतलब ठीक है, चलो विकेट भी शायद वो नहीं ले रहा अभी तक, बट वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते इफ्तिकार से कि ही विल डू दैट। तो ये भी एक बात है कि आपके मेन स्पिनर्स जो आपके सपोज टू बी द स्ट्राइक बॉलर्स हैं, और उनको मिडिल ओवर्स में आपको आके विकेट चटकाना है, वो नहीं कर रहे हैं वो चीज़। तो डेफिनेटली मतलब वो चीज़ तो है ही। अब प्रोटीन नहीं मिला, दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, विकेट बेकार की ऐसी बात है। है।
बेकार बेकार की की है। बात मिकी है। अगर ने जो बात की है, भाई तू बता हारे किस लिए हैं, क्या मसला है? फिर आप वो चेक करें कौन सा वाला मैच था, आई थिंक अफगानिस्तान नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, जब हारे हैं तो किसको उसने भेज दिया था, आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया था बाबर आजम ने। यार कोई शर्म करो यार, तुम अब्दुल्ला शफीक को भेज रहे हो जिसका तो तुम्हारा इरादा भी नहीं था हलाने का पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। खुद जवाब दो उस आके। उस्मान भाई, डज बाबर गेट सैक्ड एज द कैप्टन आफ्टर द वर्ल्ड कप? 100%। आई विल बी शॉक्ड अगर वो सर्वाइव करता है एज अ कैप्टन। अगर पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करता इस पोजीशन से, अगर क्वालिफाई करता है वो सेमीफाइनल के लिए, तो आई एम ऑल इन के भाई आप और अगले T20 वर्ल्ड कप तक भी बाबर को चांस दो। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी ही रहती है, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसी ही रहेगी ऐसा लग रहा है मुझे, तो इम्पॉसिबल है भाई बाबर के सर्वाइव करे। बड़े बड़े कैप्टन सर्वाइव नहीं कर पाए वर्ल्ड कप डिबैकल्स के बाद। तो बड़ा बाबर आजम अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान में, करंटली दी बेस्ट प्लेयर इन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट ही इज नो वे सर्वाइविंग। भाई वो PSL में सर्वाइव नहीं कर पाए। PSL के अंदर वो उनको टीम चेंज करनी पड़ी क्योंकि वहां पे इमाद वसीम को वो कैप्टेंसी दे रहे थे कराची वाले दोबारा, ठीक है, तो उनको पिशावर जाके कैप्टेंसी करनी पड़ी। वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उनको अपना सिनेरियो चेंज करना पड़ा कैप्टन दोबारा बनने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर सरवाइव करने वाले हैं। और इतने ब्लंडर्स हो चुके हुए हैं कैप्टनसी के दौरान बॉलिंग चेंजेस के अंदर कि आप तो रटे हुए हैं, मुझे रटे हुए हैं। जैसे मैं आपको जब भी आप मुझसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ उसने ऐसे किया था वैसे किया, तो सारी दुनिया को रटे हुए हैं ये। लास्ट सवाल बिफोर वी रैप द स्ट्रीम, और क्योंकि अभी इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच भी स्टार्ट हो गया है बेंगलुरु में, तो आज काफी रन बनाएगी ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। इंग्लैंड, मजा आएगा, बैटिंग तो अच्छी है ही उनकी। उस्मान भाई, डू यू थिंक कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के फॉर्मेट में चेंजेस हुए हैं और जिस तरीके से T20 को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर सेलेक्टेड ऑन T20 बेसिस, T20 लीग्स में जो है रुझान ज़्यादा है प्लेयरों का, डू यू थिंक कि थोड़ा सा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टाइप की सिचुएशन नहीं हो जाए पाकिस्तान के साथ? मतलब मैं कोई ट्रोल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा सीरियस कंसर्न के उससे बोल रहा हूँ नहीं कि नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ हम्म, बिल्कुल। मेरे हम्म, मेरे हिसाब से पाकिस्तान T20 क्रिकेट में ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूँ हाँ, सिस्टम का फर्क हाँ, नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट शायद T20, शायद वेस्ट इंडीज हो सकता है अगर हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा दूर लगता है। वो इसलिए लगता है बिकॉज पाकिस्तान ना किसी तरह टेबल क्रिकेट से ना निकाल लेता है, किसी तरह से बैट्समैन भी निकाल लेता है, बॉलर भी निकाल लेता है, आई नो, लेकिन उनको टाइम लगता है। वो इंटरनेशनल फिर फोरम के ऊपर आके ही सीखते हैं, तो किसी ना किसी तरह से यंग टैलेंट पाकिस्तान निकाल लेता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारा कल्चर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट ही है, सीधी सी बात है। तो प्लेयर निकलते रहेंगे, प्लेयर्स को यूज कैसे करना है ये कैप्टन के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाबा सिस्टम ये जो है ना पाकिस्तान का, ये पिछले 40-50 साल से सेम सिस्टम है, तो मैं उसके ऊपर वो तो चेंज करेंगे तो फायदा है। मैं आपको बस सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, इसी सिस्टम के अंदर प्लेयर्स निकलते रहे और परफॉर्म भी करते रहे, और शायद आगे भी ऐसा चलता रहेगा। अभी भी आपके पास प्लेयर पड़े हुए थे, जैसे तैयब ताहिर बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर था, मिडिल ऑर्डर के अंदर डोमेस्टिक में रन कर करके पागल हो चुका था। अभी जो रिसेंटली वो जो इमर्जिंग वाला हुआ था उसके अंदर भी उसने रन किए थे। सिंपल सी बात थी, आपको उसको लेके जाना था, लेकिन दोस्ती यारी के चक्कर में आप नहीं लेके गए। शाहनवाज धानी का बनता था लेके जाना, अगर इहसानुल्लाह फिट होते तो उनका बनता था लेके जाना, लेकिन अगर इहसानुल्लाह फिट होते तो तब भी मैं आपको लिख के देता हूँ अपने हसन अली को लेके जाना था। ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है। सैम अयूब इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा है, उसने भी रिसेंटली कल परसों 200 रन मारे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ठीक है, को 200 रन मारे हैं, कोई मेरे ख्याल में 150 बॉलों के ऊपर। सैम अयूब हैं और भी बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, रेडी हैं आने के लिए। भाई आप फखर जमान आप चांस देंगे तो वो बनेंगे ना, कैसे बनेंगे वरना वो। और आपको 50 ओवर क्रिकेट के अंदर और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको T20 प्लेयर्स को खिलाना बंद करना पड़ेगा। आपको कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी कि इसकी कैपेसिटी है 10 ओवर की। जैसे नसीम शाह है ना, साफ पता लगता है कि उसकी लेंथ टेस्ट बॉलिंग की भी है, उसकी लेंथ वनडे क्रिकेट की भी है, और वो T20 के अंदर जो दो में फॉर्मेट में सर्वाइव करके ना वो T20 में भी कर जाएगा। लेकिन जो T20 का प्लेयर है वो बहुत मुश्किल है कि वो टेस्ट और वनडे में सर्वाइव करे। तो जब तक आप ये सेपरेशन नहीं रखेंगे ना, और उसमें सेपरेशन बाबा तभी बनेगी जब आपके दो डिफरेंट कैप्टन होंगे, मुझे ऐसा लगता है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के और टेस्ट क्रिकेट के। उसको पता होगा कि भाई ये मेरी टीम है, मैंने इसका आंसरेबल होना है, ठीक है। तो मुझे
इस फॉर्मेट के मुताबिक सारे प्लेयर रखने हैं। जब अब तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन होता है ना, तो फिर ये दोस्ती जारी वाला चक्कर होता है, इसको मैं उधर भी खिला लूं, उसको मैं उधर भी खिला लूं, ऐसे भी कर लूं, वैसे भी कर लूं। इसने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा कैप्टन। बट अब पाकिस्तान के साथ कह रहे थे ना, केस होता है कि अगर एक बंदा परफॉर्म करता है तो दूसरे को भूल जाते हैं, और वो मतलब हाँ, इनसिक्योरिटी इतनी है कि वो बंदा चाहता ही नहीं कि उसकी जगह जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि वो तो टेस्ट ही नहीं करते केस, वो हाँ वो केस होगा वो कि आपको तगड़ा पाकिस्तान में अलग कैप्टन फॉर्मेट के अलग कैप्टन बनेंगे। आपको बनाना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है। सिस्टम तो आप ठीक नहीं कर सकते। अब बाबा पता क्या होता है, मैं कैप्टन हूं ना T20 का, तो मैं कहूंगा भाई मेरी टीम जीते, चाहे मेरे दोस्त खेलें, लेकिन मेरी मुझे वो प्लेयर चाहिए जो कि मेरी टीम को जिताएं। आप वनडे के कैप्टन हो गए ना, आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ T20 के अंदर। आपको ये फर्क पड़ेगा कि 50 ओवर में टेस्ट के अंदर कौन परफॉर्म करेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तो आंसरेबल हूँ 50 ओवर्स के लिए, मैं तो T20 के लिए आंसरेबल ही नहीं हूँ। तो मैं तो कभी भी नहीं खिलाऊंगा उसको जो जबरदस्ती जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा, या फिर जो मेरे सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा, या टीम में फिट नहीं बैठ रहा। तो ये फर्क होता है, लेकिन ये एसोसिएट करना कि पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा करेगी बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही है। चले क्या होता है, अभी तो बचा है काफी वर्ल्ड कप, और बातें हमारी चलती रहेंगी। थैंक यू उस्मान भाई, आए आप इतने शॉर्ट नोटिस पे। आई नो आपका लिए काफी हेक्टिक था और ट्रैवल भी आपने नहीं नहीं, किया, कोई मसला नहीं। हाँ, तो आई वॉज करते हैं ईगर टू डिस्कस क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, और करते रहेंगे क्रिकेट डिस्कस। और आज हम मोस्ट प्रोबेबली शायद उस्मान भाई के चैनल पे भी कर रहे हैं चैंपियंस लीग का कुछ रिव्यू वगैरह। तो डू शाम डू को। मेक डू मेक श्योर कि आप शाम को हमको वहाँ ज्वाइन करें। डेली फुटबॉल मैडनेस, प्राइम उस्मान, सब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें अगर अभी अभी तक आपने नहीं किया। एंड वील सी यू इन द इवनिंग, एंड देखते हैं कि इंग्लैंड कितने रन बनाता है। चलिए उस्मान भाई, जाते जाते इंग्लैंड कितने रन बनाएगा आज बैंगलोर अगेंस्ट श्रीलंका? बेंगलोर है, मुझे लग रहा है कि 350 के करीब। होप आउट तो नहीं ना हुआ, मैं देख नहीं पा रहा मैच अभी। आई थिंक वी विल सी अनदर 400 टुडे। वैसे आज इंग्लैंड ने अगर हरा दिया ना बड़े मार्जिन से, तो इंग्लैंड इज आल्सो इन द रन, इंग्लैंड इंग्लैंड क्योंकि पाकिस्तान उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा खेलना है मतलब, और हाँ। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलना है, तो चीजें उनके हाथ में हैं अभी भी। वैसे हम्म इंग्लैंड के हाथ में हैं अभी भी, अगर वो पाकिस्तान को हरा देते हैं और वो क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देते हैं अपने मैच में, तो वो उनका भी चांस है डेफिनेटली। काफी ओपन वर्ल्ड कप है अभी, मतलब क्या, फोर्थ पोजीशन के लिए बस। फोर्थ हाँ पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं सारे। साउथ हाँ। अफ्रीका तो निकल गई है, वो नहीं काबू आती। चलो चलो ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन इन द चैट। प्लीज डू मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम। स्टिल मोर देन 400 पीपल आर विद अस, तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए इस टाइम पे दिन के। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड वी विल सी यू सून। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। टेक केयर गाइस।